Hi guys, very good afternoon. This is my very first video on YouTube. This is just a walk around video of my Hero Impulse. I have restored it to stock at home only. This is 2013 Hero Impulse, August made. So the color on tank and side panels on front marks is metallic blue. This is glossy golden. The chassis is on candy red. Let me give you a clear view of chassis. Side panels, engine, chain guard and all these things are in Benz grey. So I've ordered a lot of Ford from Raj Auto Parts and Om Shakti Sports. Thanks a lot to these guys. These are original spokes and nipples from Raj Auto Parts I have ordered. So the original comes with, I guess, nickel coating. So I get it recoated in chrome क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा दिखता है लुक में. This CRF I have picked from Honda CRF original, and this is something I have designed. It's simple and minimalistic, so I have used this only. This is LED dupe type indicators. I use some chroming on paddle on this thing as well, and brake paddle. So the engine is as well painted. See. These are original knuckle guards from Hero Impulse only, and this visor is from Honda Stunner. This decal looks so good. This is HID and this is LED. This is aftermarket light I have installed here. These side mirrors are from NS200. The reason I have installed this because ये Impulse वाले जो ओरिजिनल स्टॉक आते हैं उससे ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, और प्रैक्टिकली देखा जाए तो उसका व्यू भी, रियर व्यू भी अच्छा है. This is new speedometer. This is the original exhaust note of Hero Impulse. अभी वीडियो में इतना अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा पता नहीं, बट रियल में कलर बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है. एवरीथिंग इज़ न्यू. ज़्यादातर चीज़ें मैंने नहीं इस्तेमाल करी इधर, जो नहीं मिला उसमें मैंने फिर उसको एडजस्ट करा है. दिस इज़ रेसिंग हैंडल बार. सी आई विल शो यू LED इंडिकेटर्स. इस पर थोड़ा सा वॉश करा था तो अभी पानी चले गया. अच्छे दिखते हैं इस पर. सो कलर इज़ प्रीटी गुड. कलर तो बहुत अच्छा है, और कैंडी रेड जो चैसी पे वो बहुत अच्छा दिख रहा है. अभी इस पर क्या वीडियो में कैसा दिख रहा है पता नहीं. ओवरऑल परफॉर्मेंस इज़ वेरी गुड. मैंने इंजन वगैरह का भी काम कराया था, तो अभी इट इज़ डिलीवरिंग में द एवरेज ऑफ 42 kmpl, और 42 इज़ गुड. बट अर्लियर अभी मैंने एक्चुअली इसको बोर करा के पिस्टन नया यूज़ करा था, तो इसका इसलिए अभी 52 दे रहा है अभी मुझे, और पहले मुझे दे रहा था नियर अबाउट 56 समथिंग दे रहा था. बट इट्स ओके. परफॉर्मेंस अच्छा है अभी. पिकअप वगैरह भी ठीक है. ऐसा कुछ मुझे लैग दिखता नहीं अभी. बढ़िया सब. So I'll give you a closer look of engine and this part.
आई एम प्लानिंग टू बाय RX 100 or RX 135 4 speed or 5 speed, whatever. If I'll get it, I will restore it that as well. But cannot say because I'm looking for a something new or stock condition, but I'm not getting the one. I have recently gone for an inspection of RX 135 high speed, but it was completely out of the shape. Even the block was used in RX 135 is 100 block, RX 100 block. So it was not even original. The reason I have not, bought it. अब उसका पेपर वर्क was not clear, so again I have to spend 40 to 50,000 again in paper work. So I'm looking for a bike और जिसका पेपर वर्क क्लियर है, again they are earning near about 70 to 80K. Once I will buy, I will start preparing a new video on, I mean since starting कि कैसे क्या मैं करता हूँ काम. ये पूरा मैंने घर पे बनाया है. अभी कुछ भी चीज़ इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने मैकेनिक का हेल्प लिया है. एवरी सिंगल थिंग इज़ डन बाय मी ओनली. सो टैंक जो है उसका कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है. इधर मैं ऐसा बता नहीं पाऊँगा क्योंकि अभी वीडियो में कितना अच्छा दिखता था मैं बोल नहीं सकता, लेकिन हाँ ऐसे बहुत ही अच्छा दिख रहा है. यहाँ पे देखो थोड़ा सा ब्लैक दिख रहा है थोड़ा सा, लेकिन इसको आप रियल में धूप में देखोगे ना, अभी तो मैंने धूप में खड़ा करा है, थोड़ा सा अलग दिख रहा है क्योंकि ये इवनिंग टाइम है. कुछ लोगों ने मुझे बोला भी कि ये ग्लॉसी गोल्डन इतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो कैन वी चेंज इट टू समथिंग एल्स. पर मैंने कर ही लिया था चेंज, तो इसलिए कुछ करा नहीं. बट हाँ मेरे को तो ठीक लग रहा है, मुझे इतना कुछ बैड लग नहीं रहा है इसमें. ये मैंने थोड़े से इधर कुछ चेंजेस करे थे, जैसे ये है कार्बोरेटर कैपिंग है, उसको मैंने कैंडी रेड में लिया. और इंजन माउंटिंग्स जो है, इंजन माउंटिंग्स मैंने ब्लू में लिए स्पेशली, तो थोड़ा सा यूनिक दिखता है वो कलर शेड्स भी आते हैं थोड़े से. Okay guys, thanks for watching the video. I will keep sharing some more videos on Hero Impulse, on restoration. I am planning to buy Java as well, ESD B-Type, All King or Road King, but वो मिलना next to impossible. Let's see, अगर मिला और इसको रिस्टोर करा तो आपको ज़रूर बताऊंगा. See the tank color, look, it's glossy, way too glossy. Okay guys, thanks for watching the video. Bye bye.